संपूर्ण खबर को आसिबा गत किछि दिन धरी जो चर्चा हेउथिला शेषरे ताहा सत हैला। क्रिमिया युद्ध को नहीं बढ़ुतिबा चर्चा भितर रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नैछंती बड़ निष्पत्ति। मस्कोर एक अत्याधुनिक अंतर्महाद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइल को एक्टिव करिछंती राष्ट्रपति। ए भयंकर परमाणु मिसाइल रो ना हेउछि सर्मत। ए अस्त्र हेउछि रूसियार अत्याधुनिक एवं सुपर पावर वेपन मध्यरे अन्यतम। एने रूसिया स्पेस एजेंसी मुख्य यूरी बोरिसोव सूचना देइछंती। पूर्व राष्ट्रपति पुतिन मध्ये अस्त्र विषय सूचना दे अमेरिका और नाटो को परोक्षरे चेतावनी देइथिले। वर्तमान रूसिया परमाणु मिसाइल एक्टिव हेबा परे अमेरिका और नाटो चिंतार पड़ जाइछंती। तेबे मिसाइल रो रेंज अमेरिका पर्यंत रहिछि। न्यूज एजेंसी तास सूचना अनुसार RS-28 सर्मत मिसाइल एका संगरे 10 टन ओजन 15 परमाणु मिसाइल बोही नेबारे सक्षम। विश्वर जेकोसी कोणरू ए मिसाइल साहाय्य आक्रमण करा जाई पारिबो। अन्यपटे वाशिंगटन सर्मत मिसाइल को नहीं आशंका प्रकट करथिला। नाटो देश ए मिसाइल ना शतान रखिछि। तबे जेमिति भाबरे वर्तमान पर्यंत यूक्रेन रूसिया युद्ध को नहीं बहुत गुड़िए घनघटा बहुत गुड़िए आशंका द्वंद्व सामना को आसुछि। 1.5 वर्ष परे केतेबेले यूक्रेन पक्ष भारी रहुछि तो केतेबेले रूसिया पक्ष भारी रहुछि। या भितरे रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो बड़ निष्पत्ति नैछंती ताहाकु नै वर्तमान चर्चा। मस्कोर एक अत्याधुनिक अंतर्महाद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइल एक्टिव करिसंती रूसिया राष्ट्रपति जो मिसाइल ना हेउछि सर्मत एवं नाटो देश ए मिसाइल ना शैतान रखिछि। यूक्रेन सीमा रे परमाणु हथियार रखिसंती एवं जेमिति भाबरे परमाणु हथियार रो क्षमता अछि एवं जेमिति भाबरे सुपर पावर वेपन हिसाब रे ताकू कैलकुलेट करा जाउछि। एवं याकू नहीं वर्तमान अमेरिका और नाटो पड़ जाइछंती चिंतारे। रूसियार ए परमाणु मिसाइल एक्टिव हेबा परे अमेरिका और नाटो चिंतारे पड़ जाइछंती एवं ए मिसाइल रेंज अमेरिका पर्यंत अछि। एने की न्यूज एजेंसी तास सूचना देइछि। RS-28 सर्मत मिसाइल यार पूरा ना हेउछि RS-28 सर्मत मिसाइल एवं एका संगरे यह 10 टन ओजन 15 परमाणु मिसाइल बोही नेबारे सक्षम। विश्वर जेकोसी कोणरू ए मिसाइल साहाय्य आक्रमण करा जाई पारिबो। अन्यपटे वाशिंगटन शुक्रवार सर्मत मिसाइल को नहीं आशंका प्रकट करिथिला। क्रिमिया युद्ध को नहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो बड़ निष्पत्ति नैछंती अत्याधुनिक अंतर्महाद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइल सर्मत को एक्टिव करिसंती राष्ट्रपति। रूसियार अत्याधुनिक एवं सुपर पावर वेपन मध्यरे अन्यतम ई अस्त्र। एने की सूचना दैछंती रूसिया स्पेस एजेंसी मुख्य यूरी बोरिसोव। 1.5 वर्षर अधिक समय धरी पूरा विश्व युद्धर घनघटा देखुची। बहु लक्ष लोकंकर बासच्युतर खबर बहु जनकर मृत्युर खबर। या भितर पूरा विश्व आशा करुची कि केते जल्दी युद्धर किछि गोटे शेष नजर को आसीबो। किंतु यूक्रेन जेमिति भाबरे अमेरिका और नाटो बल रे वर्तमान बलिया दीर्घ 6 मासर अधिक समय धरी यूक्रेन जेमिति भाबरे प्रति आक्रमण करुची ड्रोन आक्रमण करुची रूसिया उपरे ता चिंता बढ़ाई दिथिला रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर। किंतु रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो हटिबा जंतु नुहंती। क्रिमिया युद्ध को नहीं जो चर्चा बढ़ुतिला ताकू नहीं कि रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गोटे बड़ निष्पत्ति नैछंती एवं एमिति गोटे मिसाइल को एक्टिव करिसंती रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहा कि सीधा सड़क क्षेपण करा जाई पारिबो अमेरिका पर्यंत मध्य। एवं याकू नहीं अमेरिका और नाटो भी चिंतार पड़ जाइछंती काहे ना परमाणु मिसाइल सुपर पावर परमाणु मिसाइल भितर अन्यतम एवं रूसियार अत्याधुनिक सुपर पावर वेपन भितर गोटे बालिस्टिक मिसाइल सर्मत को वर्तमान एक्टिव करिसंती रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं ताकू नहीं चिंता बढ़ी जाइछि नाटो देश समूहर अमेरिकार मध्य। RS-28 सर्मत मिसाइल एका संगरे 10 टन ओजन 15 परमाणु मिसाइल बोही नेबारे क्षमता रखुछि एवं ता सहित विश्वर जेकोसी कोणरू ए मिसाइल साहाय्य आक्रमण करा जाई पारिबो। रूसिया निजकू अधिक सशक्त करिछि। एई क्रम रे आमे कहूछु काना विगत 6 रु 8 मास भीतर जेमिति भाबरे यूक्रेन शक्तिशाली रहिछि नाटो को तार पछपटरे जेमिति भाबरे नाटो एवं अमेरिका ताको सपोर्ट करूछंती सेई क्रम रे रूसियार विभिन्न अंचल रे यूक्रेन ड्रोन आक्रमण करुछि एवं सैन्य मानकू मृत्यु मुख को ठेली देउछि रूसिया सैन्य मानकू जहाके चिंता बढ़ाई देथिला रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर। एवं पुतिन वर्तमान निजर से ब्रह्मास्त्र को सामना को आनिछंती जहार ना हेउछि RS-28 सर्मत मिसाइल एवं याकू नाटो देश समूह कहउछंती शैतान हिसाब रे। एवं शैतान जेमिति आगरे किछि भी पडिले नष्ट करि दिए किबा ध्वंस मुह को नहीं जाए सेमिति किछि क्रम हुए तो RS-28 सर्मत मिसाइल रे देखिबा को मिलि पारे। एवं एने के अधिक आलोचना करिबा हम सहित वर्तमान वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ अछंती हम सहित अधिक आलोचना करिबा।
विनोद मिश्र अच्छे समस्त अधिक आलोचना डॉक्टर मिश्र आपको स्वागत कर न्यूज़18 मीडिया को आपको जानवा चाहिए युद्धर वर्तमान जमी भाव में मोड़ अच्छी जमी भाव में क्रम अच्छी या भितर RS-28 सरमत मिसाइल जिते आसूची सरमत मिसाइल को कौन पर आम गेम चेंजर कहूचे परफेक्ट डेटरेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट टू यूक्रेन कारण आप देखिए जो 24 फेब्रुआरी 2022 जो वार आरंभ है रशियन पर्सपेक्टिव जो स्पेशल मिलिटरी इंटरवेंशन आरंभ है जो नाटो एवं यूनाइटेड स्टेट्स कैटेगोरिकली कही जे से माने यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे ऑफेंसिव वेपनरी किंतु आपण देखंतु स्लोली लेपर्ड टैंक्स व्हिच इज एन अटैक वेपन एंड तापर सर्वशेष रिसेंटली जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट दिया जाय थ्रू नेदरलैंड्स एंड स्वीडन दैट हैज एंगर्ड रशिया कारण जदि एवली ऑफेंसिव वेपन्स यूक्रेन को दिया जाए जो थे बलियान हुई यूक्रेन हैज स्टार्टेड अटैकिंग इनसाइड रशिया दैट इंक्लूड्स वेरियस एयरपोर्ट्स डैमेजिंग military transport airplanes, sea drones, damaging a ship in the Black Sea. So this is Russia naturally. So here Russia is seeing that the NATO and the United States are breaking away from their promises. So there is a saying that MAD is the concept which needs to be brought into force. MAD is mutually assured destruction. So Bartman Russia जो missiles active करी Sarmat missile, it is an ICBM, intercontinental ballistic missile, which has long range capability to cover even United States. So itaku activate either kara jaichi that United States of America will now think twice before giving any offensive weapons to Ukraine, because Russia has made it that jodi NATO and United States offensive weapons diyanti Ukraine ko, Russia will construe that as an attack on Russia by the NATO and United States. So in order to deter them, these nuclear capable missiles have been deployed. Here out deterrence capability rahichi. Now here सीधा सड़क impact पड़िबो on United States and other NATO forces जो माने कि support करूचंती एवं are supplying Ukraine with offensive weapons, violating their own commitments. So this is I would say is a defensive mechanism by Russia rather than an offensive tactics. Our defensive mechanism works on MAD, mutually assured destruction. Tamane Russia is saying that if you are supplying Ukraine with weapons that will cause destruction in Russia, then I am ready to cause destruction on the countries those who are going to supply those weapons to Ukraine. That is how it is mutually assured destruction. So this is a defensive tactic basically carried out or demonstrated by deploying offensive weapons. अच्छा डॉक्टर मिश्र जेते बेले पुतिन तांकरे ब्रह्मास्त्र को वर्तमान पूरा विश्व को आनी छंती एवं जेते बेले अमेरिका एवं नाटो को भी भय लागु छे जहा को शैतान से माने कहू छंती यार एते अधिक रेंज अछि अमेरिका को नष्ट भी कर देई पारे अमेरिका को भी टारगेट कर देई पारे तामाने अमेरिका निजो को बंचेइबा पई किबा नाटो देश समूह निजो को बंचेइबा पई से माने भी तो चुप बसिबेनी से माने डायरेक्ट वार को आसी पारंती की सेटाई तो कथा सेमानन को डायरेक्ट वार रे इन्वॉल्वमेंट रो विरोध करबा पई ए डिप्लॉयमेंट कारण यू कैन इमेजिन जदि यूनाइटेड स्टेट्स इज जॉइनिंग डायरेक्टली इन द वॉर देन यूनाइटेड स्टेट्स इज मेकिंग इटसेल्फ वल्नरेबल टू दीस अटैक्स ICBMs. So that is why I said it is MAD, mutually assured destruction, and nuclear capable countries semanango bhitare peace eita ko nei kri chalita hai. Mutually assured destruction is the principle on which the peace between nuclear powered countries is established. Teno ithi United States jodi au gotte bi offensive move niye jota apan कहउचंती जे युद्ध को डायरेक्टली उलेबा that would bring Armageddon to operation. That would be a mindless policy. It will have definitely a restraining impact on United States. वर्तमान हमें देखिवा वर्तमान सुधा भी हमें देखु जहाँ United States is taking a very very calculated step. United States नीचे कौन सी offensive weapon ने पर्यंत यूक्रेन को देने, but it has facilitated offensive weapon supplies to Ukraine.
by granting Netherlands and Sweden to supply F-16 weapons, and by granting technical approvals to Germany to supply the Leopard tanks. So United States Bartaman Sudha directly Niger weapons down, but all the offensive weapons to Ukraine, either by Netherlands or by Germany, their technological patent lies with the United States. So without United States approval, none of these weapons can be supplied to any other country. So paroksha bhave United States is behind Ukraine and militarily strengthening Ukraine. So से केस रे डॉक्टर मिश्र जेतेबेले यूनाइटेड स्टेट्स किंबा अमेरिका जेतेबेले पछरे रहुची किंबा डायरेक्टली वर्क न ओल्हे कि यूक्रेन को बैकएंड सपोर्ट दउची से केस रे हमें तो देखिले विगत 6 रु 8 मास भीतर केमिति भाबरे ड्रोन आक्रमण हेउची रूसिया रा विभिन्न अंचल रे रूसिया राष्ट्रपति भी ताको नै कि टिके चिंतित थिला भलिया नजर भी आस्तुला सर्वत्र क्षमता को केमिति कोन प्रतिहत करि पारिबे नाटो देश समूह No, प्रतिहत करिवार गोटे मात्र there are two ways. One is an offensive way, that is the United States and NATO. They will also deploy similarly capable weapons, and the United States has enough ICBMs under their control. And the United States out advantage hochi. The United States assets are there everywhere, in Black Sea, in Mediterranean, in Pacific, in Atlantic, in Arabian Sea, everywhere there are American assets with equal full capability to launch nuclear weapons. So United States can deploy those nuclear weapons, but that would be very, very escalatory, and there would be a short fuse to nuclear escalation. जो situation that we do not want. हमें कहीं भी चाहेंगे that both these nuclear capable countries deploy their weapons in a readiness, and where nuclear exchange can take place even by a mistake. So that would be highly escalatory and unstable move. So the better move would be to restrain to the level of supplying defensive weapons to Ukraine and refrain from supplying offensive weapons. And that is the object of deploying these, cameras, Sarmat missiles. अच्छा एई समय रे डॉक्टर मिश्र किछि यूक्रेन हातरे भी रहुछि कि किछि यूक्रेन हातरे एमिति कथा रहुछि कि जोटा कि यूक्रेन परवर्ती समय रे अप्लाई करि पारिबो कथा माने यूक्रेन इज ऑपरेटिंग विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नाटो सप्लाइड वेपन्स सो एवरीथिंग इज अंडर यूक्रेन्स कंट्रोल लिसन युद्धटा करूछि युद्धटा because of the instigation of United States. So, Jadi Ukraine wishes to bring peace, Ukraine has to admit that the war is a mistake and refrain from continuously fighting. The only thing is that because of this war, Ukraine has already lost 4 provinces, which to my mind and my analysis is going to be permanent. Because जो 4 province Russia has already annexed and assimilated into Russian territory. By no means Russia is going to release those 4 territories. So it would be the Ukrainians will be well advised to refrain from further war and come back to a negotiated so that the war can come to an active war can come to an end. Moeta je war jodi sorry jai pare nikota bhavishyatare the conflict is going to be a 100 years conflict because the context also it is a conflict between the Ukrainian nationalists and the 36% Russian populated Ukrainian citizens. So say jo fissure taku widen kara jauchi from 2014 jetole by ousting President Yanukovych of Ukraine in the year 2014 sei dino to ye conflict ra sutrapad तेणु ये जो 4टा प्रोविंस की हत्या कला रशिया पर्टिकुलरली डोनेस्क एंड लुहान्स्क सिटी ए यानुकोविच जे की सरकार राष्ट्रपति थिले तांका फोर्सेस माने आर फाइटिंग ए कंटीन्यूअस वॉर विथ द यूक्रेनियन फोर्सेस इन डोनेस्क एंड लुहान्स्क फ्रॉम 2014 सो रशिया वाज अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द रशियन ओरिजिन पीपल विद इन यूक्रेन तो सही पे ये इंटरवेंशन सही पे रशिया एटा वार कोनी Russia is saying this is a special military operation to protect the interest of Russians within Ukraine. किंतु ये स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन द एंड केबे
केबे ये सबुर फुल स्टॉप हम ता ऊपर टिके समस्त नजर अच्छी कहीं आम 1.5 वर्ष अधिक समय धरिकी आम प्रत्येक जिनिसर एक्टिविटी देखुचे नाटोर एक्टिविटी देखुचे अमेरिकार एक्टिविटी देखुचे I said it's a 100 years conflict. The war might come to an end. The active military intervention might come to an end. बिल्कुल किंतु ता भितर वर्तमान ए जो नुआ मिसाइल जहां रखा जाइछि यूक्रेन सीमा रे पुतिन को द्वारा ताकू नै कि जो भय रहिछि ताकू केमिति कोन प्रतिहत करूछन्ती अमेरिका एवं नाटो ता ऊपर नजर अछि। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र आलोचना भाग नैथिबारु।